Hare Krishna, Jai Jagannath. So today very important topic ମୋ ସରକାର initiative and 5T model of governance. तो ओडिशार बहुत चर्चित जोटा थिला मॉडल जोटा कि आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 2019 नवीन पटनायक हैज अडॉप्टेड दिस मॉडल. सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट मॉडल ମୋ ସରକାର इनिशिएटिव. तो आम गोटे पर गोटे डिस्कस करवा व्हाट इज ମୋ ସରକାର एंड व्हाट इज 5T मॉडल ऑफ गवर्नेंस. तो पूर्व यहाँ देखी तो तार लोगोटा जो 5T सो ऊपर तुम टी देखा जोटा कि ब्लू कलर अच्छे देन 5टा ग्रीन कलर अच्छे. सो व्हाट आर द 5T, व्हाट आर द फुल फॉर्म. So T for teamwork, technology, time, transparency and transformation. Okay, so we'll study in details in further slides. So just remember this name, Sri V.K. Pandian, who is the 5T secretary. Okay, तो 5T secretary जदि कह किए से V.K. Pandian. Okay, ମୋ ସରକାର initiative. So, in a bid to ensure transparency in governance, Honorable Chief Minister of Odisha Sri Navin Patnaik had announced the Mo Sarkar initiative during the 73rd Independence Day celebration in the state. That is on 15th August 2019. तो जब पचार केबे अनाउंस हला इनिशिएटिव दैट इज ऑन 15th August of 2019. सब जानथियो इलेक्शन हेतिला सही 2019 मसिया रे अप्रैल मे आडे राइट. तो बोथ तमर ओडिसा रे इलेक्शन हेतिला एंड सेंट्रल लेवल इलेक्शन भी हेतिला. So tell me in the comment section, apart from Odisha, which other states are participating in the election along with the central level election, okay, national level election like MP and MLH. So MP मान को सहित को स्टेट रो जो 4-5 स्टेट थिले तांको इलेक्शन हेतला along with Odisha. So की अनाउंस कले श्री नवीन पटनायक on which date 15th August 2019, that was the 73rd Independence Day. तो कौन तार गोल थिला to ensure transparency in governance. एंड केबेठू एटा रोल आउट है और कमेंट्स है ऑन 2nd October 2019. 2nd October सब जानती हो फेमस ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती. तो 2nd October द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. सो 2019 तुम महात्मा गांधी केते 150 इयर्स भी पूरी थिला सेलिब्रेशन हेतला 150 इयर्स राइट. सो अंडर द न्यू इनिशिएटिव द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स विल कॉल कॉमन सिटीजन्स. तो ये जो इनिशिएटिव रहला मो सरकार इनिशिएटिव से कोन करा हबो. तो चीफ मिनिस्टर रहले कि अदर मिनिस्टर माने से कोन करिवे से कॉमन सिटीजन्स मान को फोन करिवे रैंडमली टू सीक देयर फीडबैक ऑन द काइंड ऑफ रेस्पॉन्स एंड सर्विस दे रिसीव्ड व्हेन दे विजिटेड द गवर्नमेंट फैसिलिटीज. तो कॉमन सिटीजन माने जतले गवर्नमेंट ऑफिस को जाउछथि जनरली तुम जानछो बहुत प्रॉब्लम फेस करिया पड़े. तो सही जिनसडा को चेंज करिया पई गवर्नेंस मॉडल को इजी करिया पई कोन करले जो बड़ बड़ हायर ऑफिशियल्स माने चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स एंड आईएएस ऑफिसर काइंड ऑफ जिथे से सो सेक्रेटरीज डायरेक्टर्स. सो दे विल कॉल रैंडमली टू द नंबर्स ऑफ द सिटीजन्स हु हैड विजिटेड. तो जे माने ऑलरेडी विजिट करथिबे तांको नंबर को कलेक्ट करा हेतिबो. तो सेटू रैंडम सिलेक्ट करिके कोन करिवे से माने तारो रेस्पॉन्स नेबे फीडबैक और से अनुसार तांको जे माने भलो रेस्पॉन्स आसीबो जे मानको पई माने जो डिपार्टमेंट पई कि ऑफिसर मानको पई तांको कोन रिवार्ड मिलिबो आउ जे मानकर भलो आसीबोनी तांको किछि ना किछि पनिशमेंट मिलिबो. Okay, so the focus of the state government's program is common public. The Odisha government is working towards ensuring that people can get the rights with the help of 5Ts. तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम जो अच्छी ये जो प्रोग्राम मो सरकार तार फोकस है कॉमन पब्लिक केमती की तांको राइट्स जो अच्छी बिकॉज सरकार मो सरकार माने कोन माई गवर्नमेंट. मो मीन्स माई, सरकार मीन्स गवर्नमेंट. तो पीपल्स गवर्नमेंट राइट. वी आर ए रिपब्लिक डेमोक्रेसी. सो इट इज द government of the people, by the people and for the people. All of you know that. So सेटा किंतु realize ही नहीं. तो that's why this model was adopted very seriously and nowadays like they have targeted to implement this in all the departments by 2020 right. So that's what it's telling. So focus on common public, ensuring that people can get the rights with the help of this 5Ts. Now so this initiative जो mo sarkar initiative is based on the 5T model of governance. We have already seen that technology, transparency, teamwork, transformation and time led. So previously it was 3 T's. देखो 3T को आउतला कि technology, transparency, teamwork leads to transformation. तो जते जो फिफ्थ वाला जो तारो ऐड हला फिफ्थ टर्म टा टाइम तो सेटा को 5T कर दिया गला. तो ट्रांसफॉर्मेशन वाज ऑलरेडी देयर बट तारो 3T को आउतला टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, टीमवर्क लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन. But now it has added the time lead, that is the 5th dimension you can say. तो मो सरकार टा को जदि पचर को मॉडल आधार रही छि that is the 5T model. And it is first phase. तो प्रथम फेज रे कोड इंप्लीमेंट होबो एटा. It will be implemented for all the police stations and district headquarter hospitals
and will later take up to all the other departments by 5th March 2020. तो एटा रोल आउट जमती आमे डिस्कस करथलु कि अनाउंस हेतला तमरो 15th August 2019 और रोल आउट हेतला तमरो केते 2nd October गांधी जी's बर्थडे और गांधी जयंती एंड तो ता टारगेट थिला कि बाय 5th March 2020 सब डिपार्टमेंट को कवर कर दे बट दे कुड कवर ओनली अबाउट 30 डिपार्टमेंट्स बाय दिस तो तुम जानथिबो ऑलरेडी हमें जतले बजेट जो डिस्कस करथिलु 2021 22 that was a long lecture actually, so I have discussed there many programs, many schemes of the government also. So there we have seen that there are 42 departments currently under the Odisha state government. So say through almost more 30 departments cover is archandi till the date 5th March of 2020. Okay, so the Mo Sarkar initiative was launched, just a minute sir. So Mo Sarkar was initially launched at all police stations across the state along with 21 district headquarters. So target thila to jemti ki ame discuss kare etre ki it will be implemented for all police stations and district headquarters hospitals. तो इनिशियली तमर जो सब डिपार्टमेंट थ्रू कोडा टारगेट हैला 2000 जो 2nd October जो लॉन्च हैला 2019 रे कि सब पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को कवर करा जिवो the Mo Sarkar initially launched at all police stations across the state along with 21 district headquarter hospitals and 3 government run medical college hospitals Cuttack. तो सब पुलिस स्टेशन रे 21 टा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और 3 टा गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेज जोड़ा कटक रे अछि बरहमपुर रे अछि संबलपुर रे ऑल्दो एबे तो बहुत हे गलानी बट इनिशियली ओनली जो ओल्ड वाला कॉलेज थिला मेडिकल कॉलेज कटक बरहमपुर एंड संबलपुर सेठी तमरो लॉन्च हेतिला आउ इन ड्यू कोर्स टाइम तमर 30 टा को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी कवर हेतिला राइट आउ जमति डिस्कस कली बाय 5th March 2020 30 डिपार्टमेंट्स कवर रिसर्च all government transactions across departments will be done through the integrated financial management system by April 1 2020. So this is also one of the like 5T रो जो ट्रांसपेरेंसी रो गोटे एग्जांपल कि सेमान ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करबा पई कोन करले सब जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन होतला जो स्टेट गवर्नमेंट जति एम्प्लॉय अछि एम्प्लॉय माने अछंती सब डिपार्टमेंट रे ताको कोन गला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करा गला लाइक डायरेक्टली थ्रू द इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम. So everything has become online so that there will be transparency maintained and there will be ट्रांसफॉर्मेशन इन द डिपार्टमेंट. ओके जो तुमरो रिपीटेटिव वर्क थिला जो ह्यूमन लाइक जे माने मैनुअली करथि जिनसडा तुमरो ऑनलाइन हे गला एंड ट्रांसपेरेंसी वाज मेंटेन्ड बाय दैट. ओके सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ Mo Sarkar? टू प्रोवाइड सर्विस विथ डिग्निटी टू द पीपल हु आर कमिंग टू गवर्नमेंट ऑफिसेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो जनरली लाइक वी हैव सीन दैट लाइक समस्त ही फेस करथे जते गवर्नमेंट ऑफिस को जाओ जनरली वी डोंट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट especially in the police stations and revenue offices. So and many times like we have to pay bribes also to make the works work done in a proper time manner. तो ये सब जिनस घटिया पई कोन जेमती डिजिटल इंडिया जेमती स्टार्ट हे से गुडा डिजिटल तमरो इन ओडिसा आल्सो दैट वाज अडॉप्टेड. आ 5T मॉडल आधार कोन करा होची मेनली ताका टारगेट हला कोन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड द सर्विस विथ डिग्निटी because it was the people's money, the taxpayers money by which all the government service offices are run in the state or in the country. So if a people or citizen is coming to the office means he is the boss there, citizen is the master, right? Citizen is the master, that every public servant should understand. So because citizen is paying the tax, you are getting the salary from their tax money, so they are the master there, right? So they should get the service with dignity, right? So to make the governance people centric, to make public servant understand that citizen is the master, to bridge the gap between the highest political decision maker in the state and the most far flung citizen. तो जो बड़ बड़ जो अछंती जो सेक्रेटरीज मिनिस्टर्स तो तांको भितरे आ जो अछंती तमरो ग्रास रूट लेवल जो सिटीजन अछंती तांको भितरे जो ग्रेप टाको ब्रिज करिया पई Mo Sarkar गोटे इफेक्टिव इनिशिएटिव and to fix the governance gaps in the state machinery, and finally that to bring in professionalism and behavioral change in public offices through a direct random feedback system from the citizens. So when the like ministerial level and higher level officers, so generally almost we knowing that in the lower level there is like people face more difficulty because people generally interact with the lower level of government servants like clerks and like some officers like group C, group B officers. So where the higher level officers they don't interact with people much. So by this one what will they do? तो जो चीफ मिनिस्टर माने अछंती कि मिनिस्टर माने अछंती कि तमरो जो लाइक कलेक्टर्स और अंडर डीजीपी हो गेले तमरो डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस
so commissioner of police, they will what they will do, randomly call to the citizens, तो ସେମାନେ randomly citizen ମାନଙ୍କୁ call କରିବେ जे माने कि already visit करथिबे आ तांको feedback नेबे तांको कोन भल लागिला like properly ସେମାନେ तांको जे ऑफिसर थिले सेठी तांको कथा सुनले कि नाही तांको काम हैला कि नाही, what are their behavior. So by this then what they'll do, they will तांको points मिलियो का मानको जो से तांको जो आधार थिबो से हिसाब रे तांको like जदि भल तांको पॉइंट्स मिलो तांको किछि रिवार्ड्स मिलियो आ जदि नो तो खराब मिलथो जदि तांको किछि पनिशमेंट मिलियो. सो बाय दिस दे विल व्हाट विल डू, तो प्रोफेशनलिज्म हे जिवो और बिहेवियर चेंज हे जिवो पब्लिक ऑफिसर जो से माने because there was no one to audit their what they are doing and all, so they used to do all this kind of things. तो जेतरे तमर गोटे कोन हे जिवो गोटे feedback mechanism हे जिवो, so they will be more conscious. So how the feedback will be collected? Feedback collection under Mo Sarkar. Remember this number 14545 हला, तो एथरे कोन करी एथरे तमे फोन करी कि जदि विजिट करथियो यू कैन रजिस्टर योर नंबर आल्सो, लाइक जदि तम नंबर एक्चुअली the initiative mandates that any citizen visiting any government office would have his her phone number registered in Mo Sarkar portal and they will get an SMS in 24 hours. हला, तो तमे जदि किछि गवर्नमेंट ऑफ सर्विस जाउ छो जोडा कि मो सरकार अंडर रे कवर होची, सो दे विल हैव टू रजिस्टर योर नंबर एंड तुमको गोटे एसएमएस मिलिया दरकार कि हां तुम विजिट करथलो एंड योर नंबर वाज रजिस्टर्ड. बट इफ दैट वाज नॉट हैपनिंग यू कैन कॉल दिस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14545 टू गेट द नंबर ऑफ कंप्लेनेंट्स रजिस्टर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ फीडबैक. ओके, सो ए जिनसटा जो अछि 14545 दिस टोल फ्री नंबर शुड बी डिस्प्लेड सब जो गवर्नमेंट ऑफिस बाहर डिस्प्ले हवा दरकार हला, along with all the 314 blocks and 317 तहसील ऑफिसेस. तो ओडिसा रे तमर 314 ब्लॉक अछि, 317 तहसील ऑफिस अछि, तो सब ऑफिस बाहर दिस नंबर अंडर मो सरकार शुड बी डिस्प्लेड हला, एटा डिस्प्ले हवा दरकार अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन. तो सब कलेक्टर मान को भी आदेश दिया है, दे हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर द आईईसी, दैट इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मटेरियल्स हला. आईईसी व्हाट, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मटेरियल बोथ इन ओडिया एंड इंग्लिश लैंग्वेज. तो बोथ ओडिया और इंग्लिश भाषा रे एई जिनसटा को जो तमर मो सरकार अंडर जो 5T मॉडल अछि सेटा प्लस तमे जो टोल फ्री नंबर कॉल कर परियो दैट हैज बीन मेंशनड व्हाट टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द बेसिक टेनेट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव. लोक मान के विषय रे आ जो ऑफिसर मान जे नाको इतर अवेयरनेस फैलेया पई एटा डिस्प्ले करिया पई सब कलेक्टर मान को कोन सरकार राज्य सरकार तरफ रु आदेश दिया छै. So as I said what happened, तो तुम एतर गवर्नमेंट सर्विस जाउ छ जोडे कवर है तुम फास्ट कोन होबो तुम डाटा कलेक्ट होबो, लाइक तुम डाटा मींस योर फोन नंबर हला, सेटा कोड हे जो तुम मो सरकार पोर्टल रे रजिस्टर हे जिवो. ओके, जदी होनी बाय चांस, so yeah you can register by giving a missed call to this number, so that your number will be registered, right? Okay, then of the numbers registered in the Mo Sarkar portal, randomly selected numbers will be picked up and calls will be made to take feedback. तो जेते जो सब जो हेगला रजिस्टर्ड हेगला, तो सेतु किछि भी नंबर को सिलेक्ट कर पारंती बाय द हायर ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर हेले कि डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स हेले रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट रो कि सेतिकार जो हायर ऑफिसर जेमति को कहले डीजीपी हे पारंती, कलेक्टर हे पारंती, सो दे विल रैंडमली सिलेक्ट लाइक सिलेक्ट माने से माने भी सिलेक्ट करबेनी, द पोर्टल डायरेक्टली सिलेक्ट करके तांको दे देबो. ओके, सो दैट इज लाइक किछि मैनुअल जिंसो ही नाही, सो से माने सेथ्रु कॉल करिवे आ तांको फीडबैक को सेठी रजिस्टर करिवे. Since all the public institutions exist for serving the people and it is an empowerment initiative, identification of the citizens who give negative feedback will not be revealed and the feedback will be taken seriously. Now suppose like people will fear to give proper feedback, like काको थोर गोटे पुलिस स्टेशन जाइथिबे और से इंस्पेक्टर विषय तांको किछ नेगेटिव दवर अछि, लाइक he or she didn't behave properly, तो से माने मे भी fear कर पारे because they were local, जे तांको ना जण पड़ जो से लाइक तांको से मे भी हैरान कर पारंती. तो से पेन कोन कहा होची कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिटीजंस जे माने नेगेटिव फीडबैक देबे तांको आइडेंटिफिकेशन को रिवील करा जीवनी. ओके, आ तांको फीडबैक को बहुत सीरियसली कंसीडर करा जीवो. सो दैट वाज द लाइक चार्टर है ना अंडर दिस थिंग 5T चार्टर. तो लेटर रैंडम फीडबैक विल बी कलेक्टेड फ्रॉम सम पर्सन्स. तो जो धर नेगेटिव फीडबैक हला तो किए मे बी लाइक जहार धर राग थिबो से भी दे पारे, सो दैट मे हैपन आल्सो. तो से पेन कोन जीवो रैंडमली फीडबैक कलेक्ट करा जीवो by some more persons who have visited to confirm the poor work by the office or official. तो जदि से ऑफिस रे कि से ऑफिस या किछि पर्टिकुलर ऑफिशियल मान को द्वारा किछि लाइक प्रॉपर ड्यूटी करा जाउ नाही, तो जो हायर ऑफिशियल मान को तरफ कोन जीवो रैंडमली किछि लोक को पठा जाय कि फर्दर डाटा कलेक्ट करा जीवो. रैंडम फीडबैक विल बी कलेक्टेड फ्रॉम सम मोर पर्सन्स हु हैव विजिटेड, लाइक हां जे माने अन्य माने से ऑफिस को विजिट करिसंती ऑलरेडी, इट्स नॉट लाइक दैट दे विल सेंड फ्रॉम देयर साइड.
तो धर गोटे ऑफिस की ऑफिशियल ना ऑलरेडी किसी इश्यू आसी तो से कन्फर्मेशन करने किसी आउ फीडबैक कलेक्ट करेंगे विरुद्ध में है विषय विरुद्ध मीन्स मेनी नेगेटिव कथा कहते so based on this disciplinary other action will be initiated so one may be wrong but other so जतले दी तीन जन को कि लाइक व्हाटएवर देयर पॉलिसी विल बी देयर तो किसी जब नेगेटिव फीडबैक आछि किसी ऑफिस द्वारा कि ऑफिशियल मान को ये रु तो सेटा कलेक्ट करके से कोन से अनुसार डिसिप्लिनरी एक्शंस नेबे and then institution also get a poor ranking और से institution को poor ranking मिलियो से department को and it will also help in improve accountability जतले like it will be competition between department and department and within department also there will be competition between different offices तो जतले गोटे like गोटे competition create हे जिवो like काहा को poor ranking मिलछि काहा को भलो ranking मिलछि even this there will be like if जो एतु जो feedback मिलछि मो सरकार अनुसार तो सेटा तमरो promotion जो official मान को promotion रे भी calculate हबो like 10 to 20% like तार परसेंटेज भी अच्छी एथरे जहाँ तुमरो मिलुची रैंकिंग और यू कैन से द पॉइंट्स से अनुसार तुमरो हबो कोन तमर प्रमोशन हो कि व्हाटएवर पनिशमेंट दैट विल बी टेकन केयर ओके अलोंग विथ अदर व्हाटएवर एक्जिस्टिंग जहाँ भी थिला तुमरो क्राइटेरिया फॉर प्रमोशन और डिमोशन सो दिस विल बी आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया लाइक जो फीडबैक मिलुची तुमरो अंडर मो सरकार इनिशिएटिव एक्सटेंशन ऑफ मो सरकार सो मो सरकार तुम जमी आम ऑलरेडी डिस्कस करूँ केबे लॉन्च होता लाइक अनाउंस होता तुम 15 अगस्त 2019 आउ लॉन्च होता तुम कमेंट्स होता केबे 2 अक्टोबर ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती तो ताको एक्सटेंशन भी करागला फ्रॉम लाइक डिसेंबर 2020 रे तुम अनाउंस कले चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक अनाउंस्ड दिस कौन की व्हाइल रिव्यूइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स इंक्लूडिंग मनरेगा एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस डिसेंबर 2020 तो डिसेंबर 2020 रे चीफ मिनिस्टर कौन अनाउंस कले कि सब डिस्ट्रिक्ट रे कौन हबो मो सरकार सेल हबो मो सरकार रो सेल माने गोटे ऑफिस टाइप रो हबो सब डिस्ट्रिक्ट रे ओपन हबो केबे जनवरी 1 2021 सुधा फ्रॉम जनवरी 1 2021 कौन पाई टू गेट फीडबैक ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इट्स बेनिफिशियरीज तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आ यार बेनिफिशियरीज मान को विषय रो फीडबैक कलेक्ट करिया पाई गोटे पर्टिकुलर सेल्स हबो जेमति तमर अन्य डिपार्टमेंट्स अछि जोतरे कि से डिपार्टमेंट तमरो कौन असुविधा सुविधा से अनुसार तुम फीडबैक होचे से गोटे मो सरकार सेल हम जो कौन एक्सक्लूसिवली तुम एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड फीडबैक जनरेशन कर कि तुम जदि एम्प्लॉयमेंट तुम अर्बन एरिया अच्छो कि रूरल एरिया अच्छो तुमको एम्प्लॉयमेंट मिलला कि नहीं बिकॉज देयर आर टू वेरी फेमस schemes also that is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Schemes and Urban Employment Generation Program तो both rural and urban area रे unskilled workers and skilled workers समस्त schemes रही so this मनरेगा is for basically rural workers rural unskilled workers जो कि 100 days guarantee is provided by the government 100 days working days per year right so that was तो तारो implement proper हो कि नहीं से पे मो सरकार से लेसला it was actually happened because of this covid pandemic covid-19 तो covid-19 बिकॉज बहुत सारा माइग्रेंट वर्कर्स तुम जोड़ा ओडिसा बाहर को जाइले से फेरी आसले तो तांको प्रॉपर्ली लाइक एम्प्लॉयमेंट दवा पई इन द स्टेट फॉर दिस दैट पीरियड इट वाज डन okay more sarkar cell so remember this okay then finally what is the 5T charter of Odisha as I had already discussed so time is of critical essence time was the fifth dimension of 5T model of governance so Naveen Patnaik honorable chief minister Sri Naveen Patnaik said that time is of critical essence time is of critical essence and which is the fifth dimension of 5T model of governance so that was added by Sri Naveen Patnaik after becoming the Odisha chief minister for the fifth term consecutively in 2019 so like you must be knowing so chief Naveen Patnaik will become the maybe longest serving minister chief minister after some years okay you can tell me who was the current longest serving chief minister like in India he was you tell me the name so actually he was from Sikkim I think yeah tell me the name in the comment section so 2000 मसीह नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर होते जोटा कि तुम इनिशियली बीजेडी एंड बीजेपी अलायंस थिला बट आई थिंक या 2014 रे दे got separated and alone BJD became majority in the Odisha State Legislative Assembly out of the 147 seats they got the 50% plus majority seats they got so in the 2019 also they got the majority so that was the fifth term so he will serve till 2024 so if he completes till 2024 he will be the longest serving chief minister consecutively in all over India so as said by the CM of Odisha तो से कौन कहले after he got like
he became the fifth consecutive chief minister. He said that the youth of today are in a hurry. If we could get international recognition in funny, it's because of timely evacuation. So funny, like तुम जानती हो 2018 मसीहारे no, it came in 2019 I think, yeah 2019 only. Funny was a cyclone, right? And Odisha affected. So funny ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତ timely evacuation ହବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ recognition ହେଇଥିଲା all over the world. And if you could get, he's telling that we had also conducted Asian Athletic Championship in 90 days. तो आम जदि फानी टाइम रे 2-3 दिन भितर ही समस्त इवाकुएसन कर पारछु जे अछन जे माने वल्नरेबल एरिया रे कि तमरो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हम जे 3 मास भितर 90 डेज भितर मतलब कंडक्ट कर पारछु जोटा कि कलिंग स्टेडियम रे हितला ऑल ऑफ यू नो. तो टेल मी हु वाज द चैंपियन इन द एशियन एथलेटिक championship held in Bhubaneswar. And also like 30 lakh more women were added in the Mission Shakti Fund. So Mission Shakti, you must be knowing, that was a program for women self help groups ହେଲା ତାଙ୍କୁ କିଛି incentives ମିଳୁଥିଲା ମିଳୁଛି basically. That was a current scheme going on under the women department, women welfare department, right? So 30 lakh more women were added in the Mission Shakti Fund. Then rollout of Kaliya scheme. So before election only that was rolled out. Kaliya scheme, I had already made a video about the Kaliya scheme under the Ministry of Department of Agriculture, right? So you can see that video also. It was a very nice video. An initiative nationally uploaded in 15 days. So 15 दिन भितर Kaliya scheme roll out कर देथिला Odisha government. Wow. And like if you could ground near universal health coverage, Biju Swasthya Kalyani Yojana 30 days. So you must be knowing in Odisha like the scheme of central sponsored scheme of India Union government. That was the Ayushman Bharat scheme, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So that was not implemented in Odisha. There is a separate health coverage model, that is Biju Swasthya Kalyani Yojana. I had discussed this also in the in the budget session video, so you can see that also. So Biju Swasthya Kalyani Yojana, that was that also rolled out in 30 days. So you can see this very famous models which was uploaded in the national wage, like in the whole nation, like Kaliya model and Biju Swasthya Kalyani Yojana, even this charter, like this Mo Sarkar initiative. So these are all like uploaded throughout India. So so Chief Minister Naveen Patnaik is saying that if you can do all these things, so this is the pace people want in the governance model also. ऐसा नहीं कि तुम कुछ certificate के लिए apply किए वो चल ही रहा है, like and so these things was there, and this should be done also in the judiciary department also, right? So although that was not under the this executive government or executive one, so that the high courts and the supreme courts, they can also do the similar kind of things, so that the cases will be done cleared very soon. So this is the pace people want in their governance model. That's why he's telling that all of us should focus on transformation towards a new Odisha. So he's saying that all of us should focus on transformation towards a new Odisha. He said said this to all the government employees, all the ministers, also all the people, right? All the citizens. So we need transformation for a new Odisha, an empowered Odisha where poverty will be a thing of the past, where women are equal partners in growth and development. So poverty will be a thing of the past. Women are equal partners in growth and development, and an empowered Odisha which is inclusive of all vulnerable sections in its landscape of development. An empowered Odisha where the dreams of our youth come true. So all these things are the goal, or we need to empower our Odisha for all these things. Okay, so that is what 5T Charter is saying. Okay, and the world should know that Odisha's time has come. The best kept secret, right, of India, that is Odisha, right? Odisha tourism tagline, the India's best kept secret. So that's what he's saying. Our honorable Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Patnaik, was saying that we need to transform Odisha into an empowered Odisha, new Odisha, right? And also I had discussed a very nice the Invest Odisha, Invest Odisha model also. Under Invest Odisha there is a GoSwift portal. So how like investment and starting a business, ease of doing business, all had to become very easier in Odisha. And Odisha is planning to attract the 6 focus sectors. So that all these things are already discussed in the video session in the Invest Odisha GoSwift.
so you can visit that video also for more information. So this is what we have already discussed all the things, and yes, I took the reference from like www.odisha.gov.in. You can visit this website. Like you can whatever Odisha related like current governance, what the things are happening, you can visit the department wise things, and also get the information. Okay, so this is a very nice and important topic. uh, so like mainly in the interview and in the in the also mains, these questions can be asked: what is Mo Sarkar, what is the 5T model of governance. So you can now it will be easier for all of you. So please let me know your feedback, like like the Mo Sarkar, I should also take feedback from all of you, right? So that I can if there is some lacking, I can improve a lot in that. I know that I am lacking because this is like I'm trying to do here that so that it will just making the videos for all the difficult and important topics, so that it will be easier for both me and all of you to for the examination. Okay, so thank you.